A very good afternoon to all. I request you all to please settle down. Our chief guest has arrived and will be here in a short while. You can see there on the screen. Okay? Youngsters, please settle down. We'll have a very good show after this, okay? ठीक है, थैंक यू। कितने बजे शुरू हो रहा है इन लोगों का? बस इसके बाद across the 700 districts we are doing अरे कार्ड ही फुल हो गया। मेरे क्या We have states reference labs 117 across the country. We have 13 national reference labs, and then we have a network of 64 public sector labs for viral load testing and Talkatora. And early infant diagnosis means whoever the child is born of a positive pregnant woman has to test for HIV to make sure that the child is 3 मिनट रह रहा है then we are that मेरे कैमरे की कार्ड रिकॉर्डिंग। these are the locations of our labs across the country. फॉर्मेट मेरे वाले कैमरा जो था वो उसमें किया था, इसमें किया ना।
टर्म्स ऑफ टेक्निकल एज वेल एज लॉजिस्टिक्स। हमारे थर्ड प्लान इंडिया एक एजेंसी है जो हमें सपोर्ट करती है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करती है। सर इसके थ्रू हम जो है जो हमारे सारे कम्युनिटीज़ हैं, हमारी जब टेस्टिंग किट एयरवे ड्रग्स हमारे कंडोम्स हमारी सारी चीज़ें जो है हम इसके थ्रू जो है सप्लाईज मैनेज करते हैं। क्यों नहीं होगी? More than 35,000 we are disease burden estimate through estimation process, then research, then data analysis. इसमें ये working with NCDC also. NCDC also does Yes, surveillance. we are doing surveillance even for hepatitis program. And They were doing separately. no, sir, that is the IDSP program which only does for acute incidences, but for diseases like HIV, to look at the prevalence. We have a very long-standing system of surveillance which has been there since the first phase, and we have an institutional mechanism. Almost all the AIMS and ICMR institutes are engaged, and hepatitis in the last round we have included as one of the biomarkers. So they depend on this. Yes, sir. Yes, sir. So we don't call it dependence; it's more of a partnership because So they don't. yes, sir. Yes, so they don't do it separately, and we get the data. And sharing it. Yes, They had some release. initial issues about sharing. No, sir, it's publicly there. This is the NCP dashboard we have developed. This is scorecard. So based on the scorecard, we are also ranking the state. Okay. And this is the key indicators. This is performance of first line manufacturing. Okay. These are different component performance. Perfect. Then access to the states and all those people. Yes, sir. We share it with the state. So program management. Yes sir. Again repeating it. Sir, Program management unit was created last year during Alok Saxena sir's time. So the purpose of creating program management is because the technical divisions, they are involved in too much of technical work. So overall, to assess that how is the program progressing and what is the performance of the program at the national and the state level, and what is the level of implementation at the district level. Based on the district prevalence rates, you can see these are the district prevalence rates. So the red ones are the districts which are high risk districts. Since the PLHIV is low, the adult population of PLHIV is more than 5% and prevalence rate is more than 1%. The yellow ones are the moderate category districts where the prevalence rate is between 0.5 to 1 and the adult population burden of that district is between 2,500 to 5,000 persons. And then the green ones, when they are low category districts. So to keep a track of how the program is progressing and what is the level of financial utilization, because we face the challenges to ensure that the states use our funds which we grant to them. So to keep a track and have an overview, the PMR division is created. So this is one of our partners. Good afternoon. Good afternoon. This is the NACO program. This is the first time in India. This is a 10-site testing, like a COVID self-testing. We are piloted so we have developed 5 models. This one is the key population, general population, private sector also. That is a research not approved in the country. It is a research license. So we are supporting the prevention. जी सही जा रहा है। So this is a TV. अक्षय का फोन ले ले। अक्षय का फोन ले ले। अरे यार मजेदार है, मजेदार है। ये बहुत आगे हो गया। तुम पीछे हो जाओ। Unit TB cases are HIV positive. For them, we are providing the particular care as well as the TB preventive. Yes, both
So TB patients are counted and all HIV patients are counted. Linkage is important. Currently, our recent with NACO patients given the consent. So this is the National Health Authority. So the Abhim cards are being very Yes, sir. We are waiting, sir. Enthusiastic response, sir. So we have a small exhibition. This year we have started. So we thought just focusing on them as beneficiaries rather than that, we need to talk about economic empowerment also. So we just started with something small and so Iya. Oh, tamu. and if you can just look up and see the umbrellas, this is painted by the red ribbon concept in कर लो भाई, आ जाओ। अपने हम गाँव से तो नहीं आ रहे।
Namaskar. A very good afternoon to all of you. आज इस विश्व एड्स दिवस 2022 के लिए आयोजित कार्यक्रम में मैं उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ. A warm welcome to all of you. World AIDS Day is globally observed on 1st December every year since 1988. The observance of World AIDS Day is towards the commitment of the government in order to strengthen HIV/AIDS response by providing care, support, and treatment to those infected and affected by HIV and AIDS. The theme of World AIDS Day for the year 2022 is Equalize. The theme Equalize is a slogan for call to action. It is of immense importance. It is of immense importance for all of us to work towards the proven practical actions needed to address the inequalities in the HIV infected and affected populations across the country and also help end AIDS. So as you all know, भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का महत्वपूर्ण स्थान है तथा किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें. For lamp lighting. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. थैंक यू ऑल. भारतीय परंपरा में अतिथियों को भगवान स्वरूप माना जाता है तथा कहा भी जाता है कि अतिथि देवो भव. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस परंपरा का पालन करते हुए सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती है. नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर भवानी सिंह, डिप्टी डायरेक्टर NACO, टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट, Special Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Shri S. Gopalakrishnan sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Sai Prasad Bhavsar, Deputy Director NACO, to welcome our Additional Secretary and Director General NACO, Ms. Hikali Zimumi. थैंक यू. अब मैं अनुरोध करती हूं डॉक्टर शांतनु पुरोहित, नेशनल कंसल्टेंट TI, से कि वे मंच पर आएं और निदेशक NACO मिस निधि केसरवानी मैम का स्वागत करें. Now I request Dr. Vibhavari Deshmukh, National Consultant BSD, to welcome WHO India representative Dr. Ofren. Lots of claps.
Now I request Mr. Utpal Das, Consultant IC and Mainstreaming, to welcome Country Director UNAIDS, Mr. David Bridger. I request Dr. Jyotika Chima, Consultant IC and Mainstreaming, to welcome Deputy Director General IC and Mainstreaming NACO, Dr. Anup Kumar Puri, sir. Thank you. Now, taking forward the program, I would request Ms. Nidhi Kesavani, Director NACO, for a formal welcome address. Over to you, ma'am. Thank you. Shri S. Gopalakrishnan ji, Special Secretary Health and Family Welfare. Ms. Hekali Zimomi ma'am, Additional Secretary and Director General NACO. Dr. Rodrigo H. Ofrin, WHO Representative to India. Mr. David Bridger, UNAIDS Country Director. The officials from departments and ministries, my colleagues from NACO Development Partners, our representatives from civil society, communities, youth and people, and all my friends from print and electronic media who have joined the event today. A very good afternoon to each one of you. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege today to extend you all a very warm welcome on the occasion of World AIDS Day. Organizations and individuals across the globe observe the World AIDS Day on 1st December each year to bring attention to the HIV epidemic and endeavor to increase HIV awareness and knowledge and speak out against the stigma and discrimination associated with HIV/AIDS. The day also calls for an integrated and enhanced response towards attainment of ending the AIDS epidemic as a public health threat by 2030 as committed under Sustainable Development Goals. World AIDS Day provides us an opportunity to bring all stakeholders together under one umbrella in the fight against this epidemic. Given the importance of this day, even during the peak of COVID-19 pandemic, NACO organized the World AIDS Day event on virtual platform, and it was attended by a large number of people from all across the country. The theme of this year's World AIDS Day 2022 is Equalize, with a special focus to address the inequalities which are holding back the progress in ending AIDS as an epidemic. We have tried to make today's event a very engaging one, as we are joined by representatives from communities, civil society organizations, development partners, youth, invitees from key departments and ministries, program managers from NACO, and health professionals coming from all across the country. The program is also being witnessed live by participants everywhere in the world. We also had multiple programs today that are being organized by various state AIDS control societies and partners throughout the country to commemorate this day. In line with the theme of this World AIDS Day, Equalize, we are making an effort today to showcase the various skills within our communities during today's event, to spread across the message that they are equally talented and stand at par with the others and are part of our society. We are delighted by the presence of our Honorable Chief Guest, Shri S. Gopalakrishnan Sir, Special Secretary Health and Family Welfare. He has been a constant source of encouragement and support to us. Sir, we look forward to listen to you and have your guidance to take this program ahead. I welcome you and thank you for gracing this occasion. I also welcome Ms. Hekali V. Zimomi, Additional Secretary and Director General, NACO. Ma'am, under your able leadership and guidance, the program has been able to move forward towards achieving newer heights and bringing the stakeholders together. I also take this opportunity to welcome Dr. Rodrigo H. Ofrin, WHO Representative to India, and Mr. David Bridger, UNAIDS Country Director, and officials from various departments, ministries,
development partners and representatives of community and young friends to this event. With these words, I welcome everyone. Thank you and Jai Hind. थैंक यू मैम. मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करती हूँ कि सभा की गरिमा को बनाए रखें और इस मौके का और इस अवसर का पूरा आनंद लें. धन्यवाद. जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी. इस वर्ष यह कार्यक्रम अपने 30 वर्ष पूरे कर रहा है. इस कार्यक्रम की 30 वर्षों की जर्नी, आइए अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की इस 30 साल की जर्नी को हम एक ऑडियो विजुअल के तरीके से देखते हैं. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टेक्निकल टीम से कि वो इस ऑडियो विजुअल को प्ले करें जिसमें हम समझ सकें अपनी प्रोग्राम की इस 30 साल की जर्नी को. In mid-80s, India faced a new public health threat of HIV. Taking cognizance of the situation, the Government of India took timely steps by launching the National AIDS and STD Control Program in 1992. Driven through a robust strategic information system of monitoring, surveillance and research, NACP has emerged as a globally acclaimed AIDS response. This has led to new HIV infections decline by 46% between 2010 and 2021, against a global average of 32%, and the AIDS-related mortalities declined by 76%, against the global average of 52%. The new initiatives of the Government of India has further augmented the national AIDS response. Today, the HIV prevalence in India is one of the lowest among the countries across the globe, with prevalence as low as 0.21% in 2021. NACP is able to keep more than 99.5% of adult population in India HIV-free through its awareness generation campaigns. 1097 National Helpline and multi-sectoral engagement with key stakeholders. NACP covers around 80 million people comprising sex workers, Hijra or transgender population, men who have sex with men, injecting drug users, prisoners, migrant workers, truckers, at-risk population, adolescent and youth, pregnant women with prevention messages, and people infected and affected by the HIV in both rural and urban areas through care and support services. Services are being provided through over 34,000 HIV counseling and testing centers, more than 1,150 Suraksha clinics. Treatment is being provided through more than 650 ART centers and 1,250 Link ART centers. NACP is the central sector scheme of Government of India and currently is in its 5th phase since April 2021. Program has evolved over the last 30 years with many game-changer initiatives like enactment of HIV and AIDS, Prevention and Control Act 2017, Test and Treat Policy, Universal Viral Load Testing, Community-based Screening and Transition to Latest Treatment Regimen. Intensifying the response further, NACP 5 introduces newer strategies like introducing dual test kits for HIV and syphilis, setting up of Sampurna Suraksha Kendras for providing services through a single window model for population at risk of HIV and STIs covering prevention, test, treat, care continuum. Interventions on virtual platforms are also being explored to augment the coverage among the high-risk and at-risk populations. The current phase will anchor the national AIDS and STD response, not only to expand the coverage of the program, but also to take it to the last mile towards the attainment of the Sustainable Development Goal of ending the HIV/AIDS epidemic
as a public health threat by 2030. Thank you, team. Thank you, Team NACO also. Now, I would like to request WHO India representative, Dr. Offren, to address the gathering, please. Namaste, namaskar. Special Secretary Gopalakrishnan, Additional Secretary and DG NACO Hekali Jimomi, Ms. Nidhi Keswarni, NACO, Dr. Anup Kumar Puri, NACO, and Dr. David Bridger, UNAIDS. Thank you. Dhanyabad, bahut dhanyabad for a very nice celebration of World AIDS Day. Bahut acha. Well, good afternoon. HIV remains a major public health threat that continues to impact millions of lives worldwide. Yet over the last few years, resources have shrunk and progress towards HIV elimination has stalled. Today, WHO reiterates its commitment to support the government of India and partners to equalize, which, as you know, is the theme of World AIDS Day this year. Access to essential HIV services, particularly for children and key at-risk populations. India, as you've seen in the video, has very much to be proud of. It is among a handful of countries that have made significant progress in addressing the underlying structural inequities and reversing the HIV epidemic. The decline of 76.5% in annual AIDS-related deaths and 46.3% reduction in annual new HIV infections in India since 2010 is a testament to the unfaltering commitment of the national and state programs, champions, experts, civil society, and the country's health workforce. So a big applause to everyone for that. As we move forward to rethink and rebuild resilient health systems, because we were all slowed down by the COVID-19 pandemic, we must do so by aligning with the global health sector strategy, of which India is a signatory in the last World Health Assembly. This includes the triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis, and hepatitis B. Moving policies for prevention to innovations for national coverage, ensuring high-quality essential treatment and care services, leveraging investments in comprehensive primary health care through the Ayushman Bharat, ensuring enabling environment for end-to-end access to diagnostics and treatment will get us to 95, 95, 95. We at WHO India assures the government and partners of our commitment to support this triple elimination and achieving the goal of 95, 95, 95. I will end by congratulating the Ministry of Health and Family Welfare, NACO, UN colleagues, and all partners for their work to ensure that HIV-related services and support are not just restored to pre-COVID levels, but are scaled up to end inequities and end AIDS globally. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Country Director UNAIDS, Mr. David Bridger, to address the audience. Good afternoon, everybody. Namaste. I can't hear you. That's a lot better, thank you. Respected Sri Gopalakrishnan, Special Secretary, Ministry of Health, Ms. Hekali Shimomi, Additional Secretary and Director General of NACO, Ms. Nidhi Kesawani, Director of the National AIDS
Control Organization, Dr. Puri from NACO, colleagues from NACO, Dr. Rodrigo, our friend, my colleague from WHO, to all the friends and colleagues and communities who we serve out there, civil society organizations, partners from media, and development partners and friends and colleagues. Look, today, on this World AIDS Day, we acknowledge and celebrate all those with whom we work and depend on. Their incredible enthusiasm, commitment, and expertise, because without them, our part in the response to HIV and AIDS across India would not be possible. We remember those who paved the way. We remember those who we have lost. We also recognise and celebrate the support, engagement and collaboration of the communities which we work with and for. This World AIDS Day, the joint United Nations Programme on HIV and AIDS and its partners are really highlighting the urgent need to end inequalities. Inequalities that drive AIDS and other pandemics all around the world. Today, the world is off track from delivering on the shared commitment to end AIDS as a public health threat by 2030. Not because we lack the knowledge or the tools to beat HIV, but because of the inequalities that obstruct proven solutions to HIV prevention and treatment. This World AIDS Day is a call to action to equalise access to rights, the right of everyone to be treated equally, a call to action to equalise access to services, a call to action to equalise access to the best science and medicine that we can afford for people. Fulfilling the promise to tackle inequalities will save millions of lives and will benefit society as a whole. The global HIV/AIDS strategy aims to reduce these inequalities that drive the AIDS epidemic and prioritise people who are not yet accessing HIV life-saving services. India's response embodies this approach, and with and through the adoption of several game-changer initiatives that we saw in the video just recently, India's National AIDS Response Program has secured results. It is one of the big global achievers. The program is an example of national commitment and strategic action on AIDS. It's also an example of partnership, recognising the strong and critical role that community play in the HIV response. But friends and colleagues, we still have a lot more to do. On this World AIDS Day, here in India, let us reaffirm today to double our joint efforts to strengthen our partnership and end AIDS as a public health threat in India well before 2030 goals. We can end AIDS in India, and we can end it earlier, but only if we accelerate our efforts together. Thank you. Thank you, sir. Keeping the community at the center of our efforts is the first guiding principle of National AIDS Control Program. So following the same tradition during World AIDS Day, communities always come forward to share their experience using this platform. और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ मिस हरप्रिया जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, वो मंच पर आएं और इस विश्व एड्स दिवस के कार्यक्रम पर अपने विचार साझा करें। हरप्रिया जी। ठीक है। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अलायंस इंडिया और NCPI प्लस का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े स्टेज पर बोलने का मौका दिया है। और उसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे भारत सरकार का और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने HIV की ट्रीटमेंट जो है पूरे भारतवर्ष में फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं।
मेरा नाम हरप्रिया है, मैं 31 वर्ष की हूँ और मैं 2013 से HIV के साथ जी रही हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी न्यूज़ मिली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ये खुशी मेरी ज़्यादा दिन तक नहीं थी, क्योंकि जब रूटीन टेस्ट के साथ मेरे HIV का टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। बहुत शॉकिंग था वो दिन, लेकिन साथ में मुझे और ज़्यादा शॉक उस टाइम पर भी मिला जब मेरे हस्बैंड को टेस्ट के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही ड्रग यूज़र थे और उनको पता था कि वो पहले से ही HIV पॉजिटिव है। बहुत शॉकिंग था, मतलब इतना बड़ा शॉक लगा था मुझे उस टाइम कि मैं इस स्टेज पे आज वो बता भी नहीं सकती। उस टाइम मुझे सिर्फ अपने अंदर पल रहे बच्चे की ही टेंशन हो रही थी कि अब पता नहीं कहीं ये भी पॉजिटिव ना हो जाए। फिर ICT सेंटर में मेरी अच्छी काउंसलिंग करी गई और वहाँ मुझे समझाया गया कि मैं ART के ट्रीटमेंट के साथ जो है एक नेगेटिव HIV नेगेटिव बच्चे को भी जन्म दे सकती हूँ। वहाँ से उन लोगों ने मुझे ART रेफ़र कर दिया। वहाँ जाकर मेरी शुरुआती जांचों के साथ मेरी ART की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। डॉक्टर की सही सलाह, काउंसलर की हेल्प के साथ मैंने ART को फॉलो करते हुए एक HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के कुछ टाइम बाद ही डिलीवरी के कुछ टाइम बाद ही 1 मंथ के बाद मैं अपने इन लॉज के वहाँ उड़ीसा चली गई। तो वहाँ जाके इतना ज़्यादा जब उनको मेरे HIV स्टेटस का पता लगा तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि बाहर ART लेने भी नहीं जाना। किसी डॉक्टर को पता लगा, कोई जानने वाला निकला तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा पूरे मोहल्ले में। फिर बिना ART ट्रीटमेंट, मतलब उस मोमेंट पे जब हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, उनसे मेरे हस्बैंड से मुझे वो भी नहीं मिला, क्योंकि उनको तो अपने नशे से ही फुर्सत नहीं थी। तो फिर ART के ट्रीटमेंट के बिना मेरी हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, बीइंग अ मदर मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया। अपने ससुराल को छोड़ा, वहाँ से मैं अपने पेरेंट्स के पास हिमाचल आ गई वापस, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए सोचना था। यहाँ वापस आने के बाद मेरी ART फिर से स्टार्ट कर दी गई। मैंने अपने बच्चे का भी ART टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। वहाँ आकर मुझे एक तसल्ली सा हुआ कि चलो अच्छा है, ज़िंदगी में थोड़ा और मौका मिल गया जीने के लिए। फिर मैं NCPI प्लस के साथ जुड़ी, जो एक नेटवर्क है, नेशनल नेटवर्क है। इनके साथ मैं बिहान प्रोजेक्ट में भी आज काम कर रही हूँ एज अ पीयर हेल्थ चैम्पियन शिमला में। मैं वहाँ पे अपनी जैसे लेडीज़ को जागरूक कर रही हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ मैं चाहती हूँ आगे चल के किसी के साथ ना हो। और जब मैं पॉजिटिव आई थी तब हमारे भारत सरकार द्वारा HIV एड्स एक्ट 2017 नहीं था, जो कि अब लागू कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं PL HIV कम्युनिटी की तरफ से हमारे सरकार का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस एक्ट के तहत अगर PL HIV या उसके फैमिली मेंबर में किसी के भी साथ किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो वो कानूनन अपराध है। और इस मंच के माध्यम से जब मुझे आज इतने बड़े स्टेज पे बुलाया गया है, मेरा कुछ भी अनुभव नहीं था इतने बड़े स्टेज पे बोलने का, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी हमारे कम्युनिटी के लिए भी, और ये सपोर्ट चाहती हूँ मैं आप लोगों से भी कि जो आज की थीम है इक्वलाइज, और जैसे कि हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो मैं यही चाहती हूँ कि आज तक जिस तरह से आप लोगों ने सभी ने हमारे साथ बना के रखा है, आगे भी हर एक PL HIV को के साथ बने रहे, हम साथ चले, इक्वलाइज होके चले और हम सबका विकास होता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Harpriya, for sharing your life experience and whatever you have achieved in life and how your baby came out to be negative. So, as per the program efforts, I think if we all go together and we can have this equalize and prevent the stigma and discrimination as well. So, in this line, I would request Ms. Sanjana Tiwari from Deepshika Targeted Intervention NGO, Delhi SACS, to please come on the stage and share her experience of how to help the communities to get themselves tested if they are at risk and to prevent themselves from getting HIV. Over to you, Sanjay. Hi everyone. मैं यहाँ आए सभी व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संजना तिवारी दोस्त है तुम्हारी। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कभी मेरा नाम संजय हुआ करता था और मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी
और मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। उसको चलाने के लिए मैं इधर उधर भटकती थी, पर मेरे अंदर एक टैलेंट था डांस का। मैं बचपन से ही लड़कियों जैसा फील करती थी, तो मैं कई स्टेज शो करती थी, रामलीला में जाना, जुलूस में जाना, झांकी में जाना, जो अर्निंग हो सकती थी अपने परिवार के लिए अर्जित करके लाती थी। उससे मेरे परिवार का गुजर बसर होता था, लेकिन 5 बहन भाइयों के होने की वजह से परिवार का गुजारा उतने में हो नहीं पा रहा था, और रोज रामलीला होती नहीं है और रोज जुलूस झांकी होते नहीं है। तो इसके लिए मैं सेक्स वर्क की ओर चली गई, और उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था HIV क्या होता है, STI क्या होता है। मैं बिल्कुल अनजान थी इन चीज़ों से, और बहुत वर्षों तक मैं बिना प्रोटेक्शन सेक्स वर्क में रही। सेक्स वर्क में रहने के दौरान मुझे एक आउटरीच वर्कर दीप शिखा समिति NGO से मिला, और उसने मुझे बताया HIV एड्स और STI का महत्व क्या है और कॉन्डम यूज करने का महत्व क्या है। जब मैंने जाना तो मैं हैरान हुई कि मैं इतने दिनों से इतने बड़े हाई रिस्क में काम कर रही थी। तो मैंने अपने आप को अपने जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाया और मैंने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो साथ ही मुझे ICTC सेंटर लेकर गए। अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर मेरी जांच हुई और लकीली मैं नेगेटिव निकली, और उस दिन से लेके आज तक मैं कॉन्डोम का इस्तेमाल करती हूँ और अपने और साथियों को भी प्रमोट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को ध्यान रखें और HIV की जानकारी लोगों को पहुँचाएं। और मैं दीप शिखा में एज ए पीयर एजुकेटर जुड़ गई थी। उसके बाद पीयर एजुकेटर जुड़ने के बाद मुझे मेरे काम को देखते हुए, मेरी लगन को देखते हुए, मेरे उत्साह को देखते हुए मुझे उन्होंने आउटरीच वर्कर अपॉइंट कर दिया। मैं आउटरीच वर्कर बन के किन्नरों के पास जाती थी, सभी दोस्तों से मिलती थी, सखियों से मिलती थी। संजना की सखियां ग्रुप बनाए और सबको मैंने अवेयर किया कि HIV कितना खतरनाक हो सकता है। उसके लिए आपको अपना हेल्थ के लिए जांच करानी चाहिए और कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही रोजी रोटी के लिए मैं ऑटो ड्राइव करती थी। मैं दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर ऑटो ड्राइवर हूं जो ऑटो चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाती है। और संस्था में फिर उसके बाद हमारे एक प्रोजेक्ट आया, क्योंकि आजकल सब लोग वर्चुअल हो चुके हैं, तो वर्चुअल प्रोग्राम में मैं safelover.in के अंतर्गत मैं वर्चुअल काउंसलर के रूप में ऑनलाइन काउंसलिंग देती हूँ अपनी हाइट पॉपुलेशन को, और जो लोग हैं सारे जो भी गे डेटिंग ऐप चलाते हैं उन लोगों को दोस्त बनकर उन्हें जानकारी देती हूँ HIV, STI और गुप्त रोगों की जांच कराने के ऊपर प्रमोट करती हूँ। इसके साथ साथ मुझे दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया मेरे ऑटो ड्राइव करने पर, और मुझे इन सोशल वर्क के कामों में जुड़े रहने की वजह से। और मैं आज आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाएं, और जो लोग HIV पॉजिटिव होकर जी रहे हैं प्लीज़ उनके साथ भेदभाव ना करें। वो भी हम में से ही एक हैं और हमें उनको अपने दिल से लगा के दोस्त बनाकर रखना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। और मेरा लास्ट में मैं धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और HIV के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें ये मंच और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। थैंक यू नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। धन्यवाद। Thank you, Sanjana, for sharing your experience and sending out the message there. So now I request our Additional Secretary and Director General, Ms. Hekali Zimomi, ma'am, to present the annual report of NACO. Special Secretary Health and Welfare, Shri S. Gopal Krishnan, sir. WHO Representative to India, Dr. Rodrigo H. Offrin. Country Director of UNAIDS, Mr. David Bridges. Director NACO, Ms. Kesarvani, and all members of the NACO family. Representatives from various departments and ministries, development partners,
civil society organizations, and dear members of our communities. Today we have gathered here to commemorate the 35th World AIDS Day. Each year, on December 1, we commemorate World AIDS Day as not just an opportunity to spread awareness about the epidemic, but also to state our commitment to the continuous fight against this chronic manageable disease. I extend a warm welcome to all of you on this important occasion. And I do hope that you will be kind enough to bear with me as I present the annual report on behalf of NACO. The theme for World AIDS Day 2022 is Equalize, which is a clarion call for action, a clarion call for action to equalize access for millions of high-risk and vulnerable populations for comprehensive prevention, screening, testing, and treatment services. A call for action to ensure the end of HIV and AIDS-related stigma and discrimination. 3 decades into the National AIDS and STD Control Program in India, we have had an extremely successful AIDS response, with game-changing initiatives like the test and treat policy, ensuring free, high-quality antiretroviral treatment, enactment of the HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017, and launch of the universal routine viral load testing. The national AIDS response has scaled new heights. With strong political leadership, evidence-led policies, and strategic implementations, the annual new HIV infections have declined by 46% between 2010 and 2021, against a global average of 32%. And the AIDS-related mortalities have declined by 76%, against a global average of 52%. Despite the significant successes, there can be no room for complacency. With an adult prevalence of 0.21% and around 24 lakh HIV-infected people, as per the India HIV Estimates 2021, HIV/AIDS continues to be a major public health concern in India. On an average, every day, around 175 people are estimated to be newly infected with HIV. This includes, on an average, 13 children becoming infected with HIV because of vertical transmission. Around 115 HIV-infected people are estimated to die of AIDS-related causes every day. Our program and our efforts become all the more significant given that all of these are preventable. As NACP aspires to attain 0 new infections, 0 vertical transmissions, 0 AIDS-related deaths, and 0 HIV/AIDS-related stigma and discrimination, it is important to intensify and expand the interventions across the prevention, detection, treatment continuum. Recognizing the need for the continued fight against HIV/AIDS and highlighting the commitment of the Government of India, the Union Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has given its approval for the continuation of the National AIDS and STD Control Program, NACP Phase 5, as a central sector scheme fully funded by the Government of India for a period of 5 years from 1st April 2021 to 31st March 2026. The total outlay will be rupees 15,471.94 crores. Currently, the domestic budget resource envelope for the national AIDS response in India has increased to 95% of the total budget. The reduction of new HIV infections by 80% is the first goal of NACP Phase 5. Continued and augmented focus on preventing HIV amongst high-risk groups, bridge populations,
and at-risk populations is the mainstay of the NACP approach for the reduction of new infections. This is being implemented through peer-led targeted interventions in urban and peri-urban areas and the link worker schemes in rural areas. Currently, 1,476 targeted interventions and 156 link worker schemes are operational across the country, covering around 55 lakh people. In addition, as the data shows, HIV prevalence amongst inmates in some settings are higher than that among other high-risk groups and rich populations. NACP Phase 5 calls for the universalization of the NACP interventions in prisons and other closed settings through a mix of service delivery models. Till September 2022, NACP interventions offering both HIV and TB services have reached 1,538 institutions covering more than 5.50 lakhs inmates. The system has identified and provided treatment to more than 2,200 HIV positive cases and 400 TB cases in these groups. NACP Phase 5 recognizes the need to reach out to newer population groups to further expand the coverage of interventions with a specific focus on the prevention of new HIV infections. NACO has recently released a white paper on virtual interventions outlining the framework for virtual interventions with a specific focus on ethics, confidentiality, and data security while indicating a potential mechanism for virtual outreach. In NACP Phase 5, the Sampurna Suraksha strategy covers at-risk HIV-negative population through a cyclical and comprehensive package of services as per the needs to keep them free from HIV. Sampurna Suraksha Kendras are currently being piloted in 3 states. There are 10 Sampurna Suraksha Kendras which are currently being piloted, and as per our action plan, additional 65 centers across 10 states have been approved for the current financial year. Reducing AIDS-related mortality by 80% is the second high-level goal of NACP Phase 5. Accessible, affordable, and quality testing and treatment services would be fundamental to the attainment of reductions in AIDS-related mortality. In the first 6 months of 2022-23, around 3.10 crore HIV testings have been undertaken in the program through various models. And if the trend continues, more than 6 crore HIV testing would be undertaken during 22-23. This would be the highest since the launch of HIV counseling and testing services under NACP in India. This highlights the need to continually strengthen our testing services. Quality laboratory services continues to be a critical enabler to the national AIDS and STI response, playing a cross-cutting role across the prevention, detection, treatment cascade. The role of quality laboratory services starts right from diagnosing infections, informing the decision for determining eligibility for ART and/or prophylaxis, and thereafter for lifelong periodic services to monitor the impact of treatment. The quality of our laboratories under NACP continues to be very high, with the discordance in results being less than 0.10% for HIV counseling and testing centers. Our early infant diagnostic laboratories have successfully participated in the external quality assurance and scored a perfect 100%. As on September 2022, there were around 16.24 lakh PLHIVs on antiretroviral treatment in the country. Most of them are on the most advanced lifelong free dolutegravir-based regimen, which fast-tracks viral load suppression and significantly improves the quality of life, also significantly reducing
AIDS-related deaths. Following the launch of free routine viral load tests for people living with HIV/AIDS in February 2018, the initiative has seen a huge scale-up, contributing to objective monitoring of the effectiveness of lifelong ART. From 2.50 lakh viral load tests in 2018 and 2019 to 10.30 lakh viral load tests in 2021-22, there has been a fourfold increase, and current database shows that around 85% of PLHIVs on ART are virally suppressed. Until September this year, we are on course to achieve a target of 13.50 lakh tests. NACP Phase 5 calls for the attainment of the elimination of vertical transmission of HIV and syphilis as one of the 5 top-level goals. This would require 95% of pregnant women to be aware of their HIV and syphilis status. Till September 2022, almost 1.5 crore pregnant women have been tested for HIV, and around 1.2 crore syphilis tests have also been conducted among pregnant women in the same period. And there is also a concerted effort to improve the testing for HIV and syphilis. NACO is further developing a dedicated strategic roadmap to fast-track the progress on the elimination of vertical transmission. While HIV remains a priority, syphilis is of particular concern for maternal and child health, given the commitment towards the elimination of congenital syphilis. NACO and NHM are jointly preparing a strategic roadmap for a unified approach to effectively respond to both HIV and syphilis amongst pregnant women and their babies. In addition, the management of sexually transmitted infections, reproductive tract infections, has also received a renewed focus under NACP 5. NACP Phase 5 intends to augment the role of the designated STI/RTI clinics, the Suraksha clinics, to provide to syndromic management of STI/RTI, and to also anchor new cross-cutting initiatives like the Sampurna Suraksha strategy. This strategy will anchor the country's progress on the prevention of new infections, reduction of AIDS-related mortality, elimination of vertical transmission, and promotion of access to STI/RTI services. The Sampurna Suraksha strategy embodies the key guiding principle of break the silos and build strategies, build synergies. This asks for coordinated action through a single window delivery system, along with functional and measurable referrals and linkages, not only within NACP, but also across national health programs and related sectors for efficient service delivery. Taking this forward, NACP Phase 5 has augmented the systematized convergence with existing schemes of the central government, along with synergy with national health programs and other related ministries. So far, memorandum of understanding have been signed with 18 key departments and ministries of the Government of India to reach the last mile of success in program implementation. We have also made significant progress in engagement with the National Health Mission, National Viral Hepatitis Control Program, and National Viral Hepatitis Surveillance Program, and so also with the National Tuberculosis Elimination Program. All of these convergences are important to ensure that we are able to effectively offer more comprehensive package of services to an aging HIV population prone to non-communicable diseases such as cardiovascular and chronic respiratory diseases and diabetes. NACO also works with coordination with the Ministry of Social Justice and Empowerment for an integrated package of service delivery through linkages
for people who use drugs, as well as focusing attention on transgender people's health. In line with the government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, NACP Phase 5 calls for the elimination of HIV/AIDS-related stigma and discrimination as one of the 5 top-level goals. The strategies adopted under the NACP have also kept high-risk groups and people living with HIV at the center of our response. With the notification of the HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 and the decriminalization of Section 377 of the Indian Penal Code, the country has brought significant structural changes to eliminate HIV/AIDS-related stigma and discrimination. Taking the national AIDS response beyond the prevention, testing, treatment spectrum, the program has engaged with state governments and other stakeholders to offer social protection schemes for those infected and affected, and to link the affected population with various social protection schemes that address inequalities and ensure that PLHIVs can lead a dignified life. I'm happy to mention here that 26 states and UTs are providing financial support to people infected with HIV and their families. NACO was also engaged with facilitating access to food and ration for sex workers to tide over difficulties during the COVID-19 crisis. The HIV and AIDS Prevention and Control Act of 2017, a protective law for people living with and affected by HIV, addresses many issues related to inequalities that PLHIVs experience in different walks of life and mandates their rights to receive equal treatment. The Act strives to provide an enabling legal environment for PLHIVs and promotes protective legal norms, allowing them to freely access healthcare facilities, opportunities for education and employment, and free movement throughout the country, and much more. The Government of India has notified the HIV and AIDS policy for establishments 2022, which provides a framework to mitigate issues surrounding HIV and AIDS in workplace settings and to encourage action on the part of employers, employees, and establishments to eliminate HIV-related stigma and discrimination. Additionally, the central government guidelines under the HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 have also been notified. I am happy to inform you that 27 states and UTs have appointed an ombudsman at the state level who are responsible to handle cases of HIV-related stigma and discrimination. Most recently, the Handbook on Prevention and Management of Stigma and Discrimination Associated with HIV and AIDS was released, which provides strategies to mitigate the levels of HIV-related stigma and discrimination in varied settings. Keeping the community at the center of our efforts is the first guiding principle of the NACP Phase 5. In its second year of implementation, NACP Phase 5 has taken steps to institutionalize community engagement and meaningful participation at the most granular level in the form of community system strengthening by offering a basket of tailored, integrated services across the prevention, detection, treatment spectrum. The findings from the HIV surveillance has provided crucial evidence on the level and trends of HIV, syphilis, and correlated infections in 8 population groups. The evidence thus generated has helped the program to build clusters in each state of the country to anchor the AIDS response through the District Integrated Strategy for HIV/AIDS, also known as the DISHA strategy, which was launched in July 2022. As we make progress under the National AIDS Response, NACP Phase 5 continues to augment and harness its robust strategic information systems of program monitoring, surveillance and epidemiology,
and research and evaluation for evidence-led interventions, improving the directions and results under the program. 30 years into one of the world's largest response to HIV/AIDS, through the National AIDS and STD Control Program, we have come a long way. Much has been made possible as a result of the strong political commitment of the Government of India to the National AIDS response. The fully funded NACP Phase 5 will anchor the National AIDS and STD response till 2026 and towards the attainment of Sustainable Development Goals of ending the HIV/AIDS epidemic as a public threat by 2030. The exemplary commitments of the multilateral and bilateral partners and stakeholders, specifically UNAIDS, WHO, the Global Fund, US government PEPFAR partners, US CDC, and USAID is worth mentioning. They bring in their resources and technical and programmatic expertise to address critical gap areas in the program, supporting development of models of implementation and service delivery for efficient scale-up. The implementing partners of both the Global Fund and PEPFAR, working in specific geographies of the country, in close alignment with the state AIDS societies, have also contributed significantly to the success of our programmatic achievement. I express sincere thanks for their unstinting presence and support across all areas of the program. I am confident of the country's progress in the attainment of zero new HIV infections, zero AIDS-related deaths, zero vertical transmission of HIV and syphilis, and zero HIV/AIDS-related stigma and discrimination through a community-led and evidence-driven program transforming and accelerating the national AIDS response. Together we can. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am. As we all know that under National AIDS Control Program, the dynamic youth of the country are being engaged to spread the messages for HIV prevention and control. So far, more than 12,500 Red Ribbon Clubs have been opened in colleges across the country. इन क्लबों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से HIV संबंधित जागरूकता पैदा की जा रही है। आज हमारे बीच राजस्थान से एक रेड रिबन क्लब के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो हमारे लिए एक रंगारंग प्रस्तुति लेकर आए हैं। मैं राजस्थान टीम से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें और आप सभी से अनुरोध करती हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करके उन्हें प्रोत्साहित करें। Lights can be dimmed. सुन हमसे क्या कहता मन है, ये जो धरती है एक आंगन है। सब लोग हैं अपने यहाँ, कोई पराया है कहाँ। तू कौन है पहचान तो, इंसान से मिल इंसान तू। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला।
न जाओ जी, मन दीद करावो जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखावो जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे। क्या ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है, धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता, कुछ दोस्ती कुछ आस था, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला, हाथ से हाथ मिला। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं राजस्थान टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ अपनी मेन स्ट्रीमिंग एफर्ट्स के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यक्रमों में HIV निवारण और जागरूकता प्रयासों को एकीकृत किया जा रहा है। इन्हीं विभागों में से एक विभाग हिमाचल प्रदेश पुलिस का भी है। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस का ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स के सदस्य एक परफॉर्मेंस के साथ हमारे साथ हैं। मैं उनसे परफॉर्मेंस के लिए अनुरोध करती हूं और आप सबसे निवेदन करती हूं कि तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जिसको आप सभी ने इतना प्यार और सम्मान दिया, तो जब ये आपके सामने आए तो एक एंट्री विशेष होनी चाहिए ना। आप सभी तैयार हैं? तो जब पुलिस की एंट्री हो, पुलिस बैंड की एंट्री हो, तो वो कैसी होनी चाहिए? एक बार हल्ला करके।
एक्सीलेंट। क्या बात है जी, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या बात। कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए घर तो कोई गम नहीं, कि मर भी जाए घर तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा भारत। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से। जागो Everyone put your hands up in the air. मातरम क्या बात है जी, क्या बात है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए हल्ला करके चारों तरफ से। वाह क्या बात है। और बहुत ही सुंदर एक्ट आपके सामने पेश करने लगे हैं आज। बहुत ही सौभाग्य है कि आज जब हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, जब हम बात कर रहे हैं समानता की,
और जब हम बड़े प्यार प्रेम से हम सब लोग रहते हैं और जो हमारा इतना प्यारा देश है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, उसकी माटी से हमको सबको प्रेम है कि नहीं है जी? क्या बात है, क्या बात है। और हमारे आदरणीय श्री एस गोपाल कृष्णन सर, आप बैठे हैं, आपका स्वागत है सर। और बड़ा सौभाग्य आपके सामने प्रस्तुति देने का आज मौका मिल रहा है। साथ में आदरणीय हमारी वी हेकली मैम बैठी हैं। मैम आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ में निधि केसरवानी मैम जो कि डायरेक्टर है नेको की, फर्स्ट टाइम आप सबके सामने परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है। एक बार जरा अपने लिए तालियां बजा दीजिए हल्ला करके। और एक बात और बताना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप जी ये है इतने बड़े उत्साह के साथ लगे हैं हमारे देश को। मुझे पता चला कि ये बच्चे बहुत अपने हाथों से सफाई करते हैं, जाकर जहाँ हम जैसे बुद्धिमान लोग गंदगी करते हैं, ये लोग जाकर सफाई करते हैं। ये वो बच्चे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और एक शख्सियत हमारे बीच में ऐसी बैठी है आज, मैं बताना चाहता हूँ, तालकटोरा स्टेडियम में आज सौभाग्य मिला है। और कभी ऐसा होता नहीं कि जब वो उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिले, क्योंकि ये लोग वो हैं जो मंच के पीछे रहते हैं और हमको बनाते हैं। तो कलर्स टीवी के ऑल इंडिया टैलेंट हेड सोहित उनियाल सर आज हमारे बीच में हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। हारमोनी ऑफ द पाइन्स को बनाने वाले यही हैं। और एक बहुत सुंदर एक्ट हमने पेश किया था, उस एक्ट के लिए रोहित शेट्टी साहब ने हारमोनी ऑफ द पाइन्स को सिम्बा 3 साइन किया है जी, सिम्बा 3 में। वो खूबसूरत एक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। और क्योंकि रात को दिन को गाड़ी आने की परमिशन नहीं होती है, तो रात को ये साउंड सिस्टम आया है और समय नहीं मिल पाया इसको, हम एक बहुत अच्छे से इसको शायद मैच नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। एक बार जोरदार तालियां जी मखनी साउंड के लिए। और शुरू करते हैं जी, चलिए। आप सब लोगों को साथ गाना है जी, ठीक जी? चलिए। आप सभी साथ में गाइएगा हमारे। बेटे का नाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, किसी के पीपल से, किसी के काजल। आप लोग सभी अपने मौत की फ्लैश लाइट जला देते हैं सभी। हाँ वो बात है। हमारे फ्लूटिस्ट के लिए जोरदार तालियां। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला।
बसंती चोला मेरा बसंती चोला मेरा रहने क्या बात है जी। और अभी आपके लिए बहुत सारे गुलदस्ते हमने रखे हैं। अभी हमको इतनी इजाजत मिली है कि हम 2 ही एक्ट आपके सामने पेश करें। 2 एक्ट हमने पेश कर दिए जी। उसके बाद बहुत सारा खजाना आपके लिए रखा है, क्योंकि हमारा भी पेट नहीं भरता है अब 2-3 घंटे से पहले। हमको भी मजा नहीं आता जब तक जरा थोड़ा सा हम, क्योंकि ऐसे बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते हमको भी। तो बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा आएंगे। सिर्फ 2 लाइंस कहना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए। सर आपके लिए मैम बहुत स्पेशल लाइन है, आपको खाली वाह वाह करना है जी। क्या करना है जी? हाय हाय हाय। कि आप सबकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो। हाय हाय। कि आप सबकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो, हर दिन खुशनुमा और संगीतमय हर सांझ हो, और जब भी भोलेनाथ इस दुनिया में खुशियां बांटे, सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत हो। सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत हो, एक बार हल्ला करके। थैंक यू। Edition of Sankalp, a compilation of fact sheets of programmatic and epidemic data. Surveillance and Epidemiology Report. India HIV Estimates 2021. HIV Sentinel Surveillance Plus 2021. Antenatal Clinic Attendees. HIV Sentinel Surveillance Plus 2021 Central Prison Sites. White Paper on Transgender Health. To bring together comprehensive health requirements of the transgender persons beyond HIV and STIs. Prevention Progress Report 2021-22. An update on the progress of prevention interventions under NACP. National Digital Repository. A digital resource center of all communication material developed on HIV/AIDS related issues. National Data Hub. A central digital repository for key reports, documents and publications of NACO. Campaign on Stigma and Discrimination. Ab nahi chalega. A 360-degree multimedia campaign for elimination of HIV-related stigma. ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। अरे ये कहां से आ गया? इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण
भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ, गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। Thank you. Now I request the dignitaries to kindly release the reports. Thank you all. Now I request the technical team to play the message of Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Ms. Bharti Praveen Pawar, for the World AIDS Day event 2022. हर वर्ष Audio, please. एड्स दिवस किसी विशिष्ट थीम के साथ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब है समानता। भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी के लिए असमानताओं को दूर करने और एड्स को समाप्त करने में मदद करने के लिए आवश्यक एवं व्यावहारिक कार्यों के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन असमानताओं को दूर करने में तत्पर है जो देशवासियों के स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न करती है या देशवासियों के लिए उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा नागरिकों का सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने पर जोर दिया है। साथियों, नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा कार्य किया है और इसकी सफलता को वैश्विक मान्यता भी मिली है। इस कार्यक्रम के तहत अत्यधिक जोखिम वाले वर्गों और कमजोर जनसमूह में निःशुल्क जांच को बढ़ाया जा सका है। बढ़ती हुई संख्या में पीपल लिविंग विद HIV को आजीवन निःशुल्क ART पर रखा जा रहा है और उनकी नियमित रूप से वायरल लोड के लिए जांच की जा रही है। नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नेशनल एड्स टोल फ्री हेल्पलाइन पूरे देश में व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है। एड्स को समाप्त करने के लिए हमें इंक्लूसिव एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अपनाना आवश्यक है और निर्धारित किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों, निजी क्षेत्र, भरोसेमंद संगठन और सिविल सोसाइटी को इसमें शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है। इस वर्ष भारत सरकार ने HIV एंड एड्स पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशमेंट 2022 को भी नोटिफाई किया है। इस नीति का मूल उद्देश्य प्रतिष्ठानों में HIV एड्स संक्रमित और उससे प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव ना करें, उनकी गरिमा और उनके अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित करना है। जैसा कि इस वर्ष की थीम से प्रकट होता है, द इक्वलाइज स्लोगन इज अ कॉल टू एक्शन। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे सामने आ रही चुनौतियों और कमियों को हमें पहचानना होगा और इन्हें कम करने का प्रयास करना होगा। आइए हम सब असमानताओं को समाप्त करने और एड्स को समाप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने की शपथ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हो और सभी रोग मुक्त रहे। जय हिंद।
Thank you, team. Now I'd like to request our chief guest, Special Secretary Sir Shri S. Gopalakrishnan, to kindly address and guide us on this important. Namaskar, good evening. Hekali, Nidhi, Dr. Puri and the entire NACO team, Rodrigo from WHO, Bridger from UNAIDS, and all the development partners, and a very excited audience. सबको नमस्कार. अभी कुछ बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस थे, कुछ बच्चों का और कुछ अपने पुलिस का. उसी टाइप का एक परफॉर्मेंस हम सब की तरफ से एक्सपेक्टेड है, इसीलिए आज हम यहाँ जुड़े हुए हैं. आज तो 1 दिसंबर है, वर्ल्ड एड्स डे, तो उससे ये समझ सकते हैं कि ये दुनिया भर का विषय है, खाली दिल्ली का या देश किसी हिस्से का नहीं है, दुनिया भर का हिस्सा है. दुनिया भर में कुछ विषय है, ठीक है. कई दशक पहले तो एड्स के नाम से डरते थे लोग, जैसे आपने टीवी में भी देखा, किसी से छूना या बात करना उससे भी डरते थे, क्योंकि हाल ऐसा था. अगर किसी का एड्स से मतलब संकलन हो गया तो ज्यादातर यही होता था कि वो मरता. कई लाखों लोग दुनिया में कई सालों में एड्स के वजह से अपने जान दे चुके हैं, लेकिन आज वो हाल नहीं है. आज जिसको भी मतलब एड्स या HIV जो कहते हैं, अगर उससे मतलब अफेक्ट होता है और ठीक टाइम पे उसको डायग्नोस करते हैं तो मरने का तो मतलब लगभग चांस ही नहीं है. उतनी अच्छी दवाइयाँ भी हैं. तो अब अगर ऐसा है तो दुनिया भर में एड्स डे क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम सब यहाँ मिलके क्यों काम कर रहे हैं? इस विषय पे जैसे अपने माननीय MOS ने भी बताया, अपना PM साहब का भी विजन यही है कि सबको फायदा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास. अब नंबर देखिए, अब अपना देश का मतलब, अपने देश में कितने लोग होंगे? 130 करोड़. 130 करोड़ तो बड़ा नंबर है, ठीक है. एड्स का हाल क्या है सोचिए. एड्स का जिन लोग अभी कुछ पहले में कुछ लोगों ने बात किया ना, PL-HIV मतलब पीपल लिविंग विथ HIV. अब कितने लोग हैं इंडिया में जो एड्स से अफेक्टेड हुए हैं? मोटा नंबर आप देखेंगे तो लगभग 16 लाख लोग हैं. ये 16 लाख लोग को टाइम पे दवा देते और अगर उनको मतलब पोषण और दवा की देखभाल किया जाए, वो आराम से अच्छी तरह से नॉर्मल जीवन जी सकते हैं जैसे हम लोग हैं. तो इस अवसर पर हम सबका क्या बनता है? तो हमें 2 विषय पे ध्यान देना है. जैसे मैंने कहा 16 लाख नंबर, एक्चुअल नंबर उससे ज़्यादा है. हो सकता है कि कुछ लाखों लोग और हैं जिनको मालूम नहीं है कि मतलब वो एड्स से अफेक्टेड हैं. तो अपना काम ये बनता है कि उनको भी मैसेज ले जाएं, उनका भी टेस्ट करवाएं और उनको भी इस ट्रीटमेंट में ले आएं, ताकि वो लोग भी बचेंगे और शांति से अपना जीवन जीत पाएंगे. तो आप लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या जो भी हो, आप लोगों की वजह से ये हम उनके तक ये मैसेज ले सकते हैं. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी कुछ टाइप के लोगों को ही मतलब ये एड्स अफेक्ट करेगा. हाई रिस्क बिहेवियर जैसे कहते हैं, हाई रिस्क बिहेवियर जैसे आपने देखा कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं या कुछ लोग सेक्सुअल बिहेवियर कुछ लोगों का है, उनको ज़्यादा हो सकता है. लेकिन सेफ्टी और प्रिकॉशन से ये तय कर सकते हैं कि उनको मतलब टेस्ट करवा के ट्रीटमेंट पे ले आएं. तो हम सब लोगों का मकसद ये होगा कि ज़्यादातर लोग जो छूट गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीटमेंट के नेट के अंदर ले आए. लेकिन उससे आधा बात ही बनता है. बाकी जो है, जो इस वर्ष का थीम है इक्वलाइज, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए खाली हमें ये याद रखना है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना है. जैसे कोई पर्सन अफेक्टेड हो तो उसके साथ
मतलब उसको उसकी तरफ भेदभाव करना वो कानूनन गलत है। अगर आपकी तरफ में कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये इक्वलाइज हमें इंटरनलाइज करना है और जो भी चुट गए हैं उनको ट्रीटमेंट पे ले आना है। अगर ये दो करते हैं तो अगले कुछ सालों लगभग 2030 तक हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं कि जितने लोगों एड्स के साथ मतलब अफेक्टेड हैं उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वही अपना मतलब निशाना है। और इस देश में हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, इससे भी मतलब क्रूर कोविड जैसे महामारी से भी हमने बाहर निकले हैं। जब हम कोविड से निकल सकते हैं, उस तरफ से मतलब महामारी के हाल से हम निकल सकते हैं, एड्स जैसे विषय से आसाम से सबको बचाने के लिए जो मतलब तकनीक हो या जो मतलब टैलेंट हो या उसके लिए जो रिसोर्सेस हो, पैसे हो, सब अपने हाथ है। तो अगर हम इसको कर नहीं पाएंगे तो मतलब वो उन लोगों जो मतलब एड्स से पीड़ित हैं उनके खिलाफ बहुत अन्याय होगा। तो उसे हमें मतलब बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सब लोग ट्रीटमेंट पे आए और सब लोग डेफिनेटली किसी की तरफ मतलब जिसके खिलाफ भी कोई भेदभाव न करें। जब तक हम ये ठीक से करें, डेफिनेटली जल्द ही हम 2030 से पहले एड्स को हम अपने वोकैबुलरी से भी निकाल देंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक विषय यहाँ ये है, जैसे मैंने कहा नंबर कम है लेकिन बहुत फैला हुआ है। देश के कोने कोने में वहाँ कुछ, यहाँ कुछ, वहाँ कुछ जैसा है। ऐसा नहीं कि अगर सारे एड्स के लोग एक ही जगह मिलते हैं तो तुरंत हम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ फैला होने के कारण इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कई लोगों की मतलब एकजुट करके काम करने का आवश्यकता है। सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के सोसाइटीज़ हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, अलग ग्रुप्स हैं, एनजीओस हैं, इन सब के मतलब एक साथ मिलके काम करने से ही हम इसमें कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन सब लोगों ने, जैसे मैंने कहा, ये सारे संस्थाओं ने पिछले सालों में बहुत अच्छे काम करने के कारण हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि सारे नंबर नीचे गिर रहे हैं। एड्स से जितने लोग मरे हैं, एड्स से कितने लोग मतलब पीड़ित हैं, वो सब नीचे हो रहा है। उसी तरफ बढ़ने के लिए इन सब लोगों का साथ मिलने का आवश्यक है और बहुत अच्छा काम किया है। I wish to appreciate and congratulate all the agencies involved, and I hope in future we'll all work together to ensure our goal and reach it by 2030. Thank you for an excellent show. थैंक यू सर। अब मैं मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों का अभिनंदन करने हेतु सर्वप्रथम मिस्टर बेंजामिन से निवेदन करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि विशेष सचिव श्री एस गोपालकृष्णन सर को मेमेंटो प्रस्तुत करें। Thank you. Now I'd like to request Ms. Parul, Consultant IC and Mainstreaming, to kindly present the memento to Additional Secretary and Director General NACO, Ms. Hekali Zumumi ma'am. अब मैं मिस्टर शुभ्रजीत से निवेदन करती हूं कि वे निदेशक नाको मिस निधि केसरवानी मैम को मेमेंटो प्रस्तुत करके उनका अभिनंदन करें। I request Ms. Shuchi to present the memento to the WHO India representative, Dr. Offrin sir.
Now I'd like to request Ms. Ira Madan to please present the memento to Country Director UNAIDS, Mr. David Bridger. Now I request Mr. Vishal कि वो DDG, IC, Mainstreaming और CST Dr. अनूप कुमार पुरी सर को मेमेंटो भेंट करें. Thank you. Now I request Dr. Anup Kumar Puri sir, DDG, IC, Mainstreaming and CST to please propose the vote of thanks for this session. We have one more program in line. Dignitary on the dais, off the dais, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It is my proud privilege to propose vote of thanks on my behalf and on the behalf of NACO to all the participants who have made it convenient to attend the observance of World AIDS Day. This day is very special to all of us because it enhances a chance to know each other from close proximity. We share our learnings and experience. My first thanks goes to Shri Bharti Praveen Pawar ji, Dr. Bharti Praveen Pawar ji, who, in spite of her busy schedule, sent her recording wherein she has addressed the gathering. And I am also extremely grateful and indebted to Shri S. Balakrishnan ji, Special Secretary, Health and Family Welfare, for making it convenient to be present here and enlightened us with his thought-provoking address. We thank sir from the core of our heart. Your words of the motivation and wisdom will enhance our zeal and strength. I extend my hearty gratitude to Madam V. Hekali Zimomi, Additional Secretary Director General, NACO, for guiding us in each steps, and her continuous supervision and leadership made this grand observance happen. Madam, we thank you with all sincerity for your active and strong leadership and guidance. I express my gratitude and thank Madam Nidhi Kesavani, Director NACO, for her presence here. Her continuous support, guidance, motivation help us each day to underline the importance and magnitude of this program. We are grateful to Dr. Rodrigo H. Offren, WHO country representative to India, for his benign presence and address to the gathering. We are also grateful to Mr. David Bridger, UNAID country director. Sir, your presence today in this function has immensely enhanced its importance. I'm sure that your support will boost us in the coming days too. We are deeply grateful to officials from the department and ministries, development partners, representatives from civil societies and communities, youth, people who have joined this event today. Your continued guidance, support to the program is always appraised and with high regard. Having said this, we believe that we would achieve new heights under all your stewardship. I express my gratitude to all the officials and staff of Delhi SACS and Delhi Police, without
whose support this event would have not been possible. And of course, most important is the band from Himachal Pradesh. I thank them from the core of my heart. I also thank official staff of this stadium, also supported us in each step. My thanks goes to housekeeping, sweeping staff too, including security staff of this stadium. We express our heartfelt thanks to media and all my colleagues from NACO for your presence and making this event a success. Thank you so much for standing together with us. I would like to take a moment to appreciate the youth who come all the way from various corners. ये अब आप लोगों के लिए है. मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. ये जो लोग जो मेरे यंग पार्टनर यूथ हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, जो रेड रिबन क्लब से हैं, जो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आए हैं और जो अदरवाइज भी हमारे को हेल्प कर रहे हैं. तो ये मैं उनको अपने दिल से शुक्रिया करता हूँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अदरवाइज ऑल्सो हमारे को सपोर्ट करने के लिए. And lastly, I take this opportunity to make this point that inequalities which perpetuate the AIDS epidemic in India are not inevitable. They are definitely evitable and we can tackle them. And this World AIDS Day, each of us actually must promise to address the inequality in terms of gender and community. And further, I would also say that when we know that we are all offspring of the same God, therefore we are all siblings, and hence there cannot be any inequality amongst us. Thank you very much. Namaste and Jai Hind. Thank you, sir. Now, I request all the youth to please stay back. We have cultural performances for you all. And I thank our chief guest, sir, and all the dignitaries on the dais for being there in the program. Sir, one photograph, I think you want to have. One photograph. Yes. In the front. So, meanwhile, I request Nagaland sax. So the performance. So, the first performance is going to be presented by representatives from Noklak district of Nagaland state located at the Indo-Myanmar border. And the chanting of the cultural song signifies overcoming all odds and welcoming a person. So over to you, team.